Welcome to the new series of my Gujarat episodes, where I am on an unforgettable 9-day motorcycle ride across the vibrant state of Gujarat, from a dream come ferry ride across the sea to the salt deserts and to the international borders, learning new lessons in life. How I learned the importance of food, meeting new people, visiting ancient temples, and to the world's tallest statue, covering a total distance of 4,000 kilometers solo. This journey is packed with stories and adventures. If you have slipped any of these stories, do watch it in the playlist tag on the screen now. As my previous episodes was about the Modera Sun Temple and Rani Ki Vav, which has a detailed explanation about the architecture and the history of it. If you have still missed the episodes, do watch the same in the card that pops out now. Your support is the only chance of getting this video reaching into many more. As always, keep supporting and let's hit the road together one day. Day 6. This is all the stuffs that I have just thrown away. So copying is going on there, and I had a few rice from the previous night which I didn't want to waste it, so I just boiled a little bit of hot water for drinking and put the hot water in this too. I'll have this for breakfast for time being. So last night was a bit expensive, so this is all about the room which I taken on the day 5 ending and day 6 morning. So all things charged and the copying is also completed now. I have to just cross verify once if all the files and folders are correct as is. I've transferred into the disk 4 TB disk which I bought because I don't want to miss anything right down there, right? So this is it. All set for the day 6. It's already 8:39. Keep supporting and keep watching. Peace. Good morning. Day 6. Signing in. This is a hotel that is stayed Sarvotam. So it's in Vadodara, just 50 kilometers far from Statue of Unity. Right. So today's plan is Statue of Unity, and let's chase Statue of Unity for the time being, and let's continue. So guys, the ambience of this place, this 10 kilometers range, it's so nice. It's very well decently and everything is in proper state and structure. There's no flaws itself. बोलिए भैया जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाके देख आपको यहाँ पे बाइक रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको बस में जाना पड़ेगा। अच्छा, टिकट वगैरह भी यहाँ से मिलेगी। ओके, पता नहीं था इसलिए। हाँ, इसलिए तो आपको यहाँ अंदर पार्किंग। ठीक है सर। This is also one sort of money to the government. The parking fees. सर कहाँ डालना है टू व्हीलर? Again parking fees. It's all nice. I gotta park it in such a way that I would be able to take it back. If I park like this and go, and later on if I would not be able to come back and pull over, it's then gotta be a problem. So what I'll do is I'll put it here so that nobody disturbs me and my bike. So it still shows 6 kilometers from here. So this 6 kilometers is driven by EV or something. So we had entered Statue of Unity. There is a ticket counter there, and this is 380 rupees ticket which has to be paid online, and there's a bus that takes it there.
जहाँ से हमने आपको पिकअप किया है उस पॉइंट का नाम है श्रेष्ठ भारत भवन। अगर किसी ने एकता क्रूज और रिवर राफ्टिंग का टिकट लिया हो तो उनका पिकअप पॉइंट भी श्रेष्ठ भारत भवन से रहेगा। तो कृपया करके अपने स्लॉट से 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। यहाँ के जो नियर बाय पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है एकता मॉल, एकता फूड कोर्ट, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन एंड मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक पर बेस्ड है। तो जिसे भी मियावाकी फॉरेस्ट की विजिट करनी है उनका ड्रॉप पॉइंट यहाँ पर साइड जो व्हाइट कलर का एरिया दिखाई दे रहा है वो है नर्मदा घाट, जहाँ पर शाम के समय में 7:45 बजे नर्मदा महाआरती होती है, जिसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी टिकट या चार्जेस नहीं है, पर अगर आपको महाआरती में यजमान बनना हो तो उसके लिए आपको 1100 रुपीज वाला टिकट लेना होगा। और उसी के पास में एकता नर्सरी है जिसकी भी आप विजिट कर सकते हो। उसमें अलग अलग वेराइटीज के कर पाओगे। So this bus is limited to 50 kilometer speed only. So it's written there 15. This is an EV who is doing the service. This is the bus that we have to take. Basically, you cannot take a bike or two-wheeler, four-wheeler or some whatever it is on your own vehicle. It is only done via this. जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है। यहाँ से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उसके फाउंडेशन लेवल से अच्छे से देख सकते हो। उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एग्जीबिशन हॉल, मिड लेवल और चेस्ट लेवल पर जो विविंग गैलरी बनाई गई है वो विजिट कर पाओगे। एंड थर्ड एक्सप्रेस टिकट, जिसकी प्राइस है 1030 रुपीज। उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री टिकट और विविंग गैलरी टिकट दोनों इंक्लूडेड है, बट आपको किसी भी क्यू में नहीं खड़ा रहना। और इन तीनों ही टिकट्स में डैम व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर इंक्लूडेड है। तो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करने के बाद में डैम व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर भी विजिट कर सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर किसी भी टाइप का हैवी लगेज अलाउ नहीं है, तो कृपया करके अपना लगेज स्टेशन नंबर 9 के पीछे जो लॉकर रूम है वहाँ पर रख दीजिएगा। आप अपने साथ में हैंड बैग, मोबाइल फोन, वाटर बॉटल और अगर बेबी है तो बेबी फूड इतना ही कैरी कर पाओगे। जिसे भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करनी हो उनका ड्रॉप पॉइंट यहाँ पर है। जिन्हें जंगल सफारी, टाइम जोन, नेक गार्डन, डैम व्यू पॉइंट, वैली ऑफ फ्लावर जाना हो वो इसी बस में बैठे रहेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट है। So guys, this is the first viewpoint after the bus drops. This is so nice. Ready? So right after the frisking, it took a while for my frisking because I'm in gears. All these protectors were scanned again and again of the shoes, pants and jackets both. All. So there is an entry of Statue of Unity. There is actually an escalator here, so because of that people in this pathway are less. Everybody wants to go in escalator, so I also took, at last I walked from there halfway, but once I saw this escalator I thought let's stand on this escalator rather than just going, because I've seen this entire premises
is a green zone. So whatever runs is on pure EV, pure electricity. I think everything is solar powered. Few of them, because before this when we entered there are many solar panels there. So everything is running here in solar. So you don't have to walk here, basically use a escalator. Somewhere getting closer. 48 floors, 35 seconds. Crazy.